Hi everyone. It's the day 2 or I would say shopping का दूसरा दिन for the Chikmagalur ride. What we did today is me and my friend Krishna wanted to get air filters. So हमने क्या किया, हम गए V-Gears जो कि है कुकटपल्ली में इन हैदराबाद एंड फिर उसके बाद हमने वहाँ से लिया एनगेज का एयर फिल्टर. This is the one. इसका pricing is 3000 for Meteor as well as Rebound Classic as well as Hunter. So तीनों बाइक रॉयल एनफील्ड की उसमें सेम फिल्टर लग जाएगा. So if anyone tells you कि मेरे पास बस Meteor का एयर फिल्टर है ऑफ एनगेज, tell him that वो Hunter पे भी लग जाएगा और Rebound Classic पे भी लग जाएगा. प्राइसिंग तो मैंने जैसे बताया इट इज 3000 बट इफ यू गो टू V-Gears वो आपके हिसाब से हाउ यू टेल हिम एंड देन कुछ डिस्काउंट वो लगा ही देते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेल यू अबाउट द स्पेसिफिकेशन बट एज अ वेरी लेमैन पर्सपेक्टिव, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो आप गूगल कर ही सकते हो, सिंपल सी बात है. सो one of the main factors that got me into buying this air filter was 1 lakh kilometers of air filter life. 1 lakh kilometers आप सोच के देखो, it's too much. And plus the thing is that it gives you a proper number of 30% increase in your power. So मेरी बाइक मीटियोर में पहले से एक AEW का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा हुआ है. लाइक मैंने लगाया था वो 2 साल पहले एंड द आउटटेक वाज फ्री फ्लो बट इनटेक वाज द OEM एयर फिल्टर व्हिच वाज चोकी. सो नाउ व्हाट आई हैव डन इज पुट अ परफॉर्मेंस एयर फिल्टर इन दैट. सो उससे क्या हुआ है कि इनटेक भी फ्री फ्लो हो गया है. देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ एयर दैट गोज इन एंड द आउटफ्लो इज आल्सो नाइस. So that has given me a nice boost in the power. I don't know because I have not tested it in dyno कि कितना है, but in handling it is very flickable. Also in the ratio of gears, I mean to say when you put down a gear and the amount of RPM that the bike takes to change to another gear is a bit higher than what a usual stock Meteor would do. But now इस डब्बे में I have this stock air filter. इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि मैं ये क्यों रखा हूँ, बट देन उससे पहले आप देखो कि मीटियोर में परफॉर्मेंस एयर फिल्टर एनगेज का कैसे इंस्टॉल होता है. So let's go there. Check it out. So we came at the Munna Bike Center, Service Center here in Madhapur. So हमने ये 2 चीज़ परचेज की है. This is the Engage air filter for the Himalayan 450 and Engage air filter for my bike. That's Meteor 350. So अभी बस दिखाएंगे कि how do we fix it off. How do we do a DIY fix? Yeah. So it's a good to learn thing. बस उसके बाद फिर we'll just push off. And we'll see that कि how does it perform rather than a normal air filter. तो वो सब करके फिर निकलते हैं आराम से. चल. So हम बस जो नॉर्मल बोल्ट्स है, 2 बोल्ट्स है आपके LNK के साथ खुल जाते हैं. LNK आई थिंक 5 नंबर लगता है ना इसमें. 5 नंबर के LNK के साथ जो खुलता है. ओ हाँ क्या, अरे बढ़िया, फिर तो सॉर्टेड है. भैया को भी टैग कर देना यार, चलेगा, बहुत बढ़िया. अरे मैं भी भैया वो 2-4 डाला, उसके बाद मैं भी छोड़ दिया था. वो एडिटिंग में बहुत दिक्कत होता है, बस बहुत टाइम लग देना पड़ता है. हट रे, रुक रे, मेरे को अपना वो ऑयल फिल्टर डिस्कनेक्ट करना था, एयर फिल्टर. सो बस 3 स्क्रू है यहाँ पे, यू कैन सी.
बिकॉज ये पहले कभी किसी ने लगाया नहीं, आई थिंक, मेरे को लगता है किसी ने लगाया नहीं है मीटियोर में, तो बताना बेटर है क्या सीन से। बहुत सही बात है, क्या कि किसी और को हाँ पता चलेगा, अच्छा रहेगा ना। देखिए इसमें और उसमें डिफरेंस देखिएगा आप। सो ये है एंगेज का एयर फिल्टर एंड ये है आपका नॉर्मल एयर फिल्टर। आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं, द मेकिंग एंड देन इसके एयर फ्लो में देख लीजिए, नाइस। 1 लाख लगा। अब चलिए इसको लगाते हैं। तो इट्स जस्ट नॉर्मल, आप इसको बस हाँ इसमें फिट कीजिएगा, बस फिट करना है एंड उसको थोड़ा साफ करना है। क्या कुछ ऐसे भी है ही नहीं क्या? अच्छा सॉर्टेड है फिर तो। हम लोग बहुत अच्छे से रखते हैं भैया बाइक को। हाँ ये 2 बोल्ट्स है जो आपके बॉडी पे लगेंगे पैनल के साथ, बस काम खत्म हमारा, ऑलमोस्ट डन है। हाँ यहाँ पे 2 बोल्ट्स आराम से लग जाते हैं। सो राइट साइड और नीचे में 2 लॉक है और फिर 2 स्क्रूज से टाइट हो जाता है। डन ब्रो। एंड बस ये इतना इजी था, आराम से होना है। इसको रख देना, इसको जरूरत पड़ेगा हम लोग। सो आफ्टर दिस फील्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, फॉर द एयर फिल्टर टू सेटल इन एंड टू टेक द ब्रीदिंग एंड गेटिंग द बाइक एंड द ईसी यूज्ड टू इट, व्हाट यू नीड टू डू इज इसको 10 मिनट के लिए आइडल छोड़ना पड़ता है। नाउ विल डू दैट। ये वाला बस खोल रहा है, आप पकड़िए, मैं पकड़ा हूं। ओ आवाज चेंज हो गया भाई। Nice. So why do we need the OEM air filter? Plan is, so in 15,000 kilometers it is said to be changed, but I believe I need to, not change in the sense to re-oil and lube it again. So we as in me and Krishna, हम दोनों ने air filter साथ में लिया. So the kilometers which I clocked till now is 17,717 kilometers, and now I'm changing the air filter. So 15,000 from here or 10,000. What mostly me and Krishna will do. What we will do, what we have decided, we will take one cleaning kit, and that comes for Engage cleaning kit comes for around 700, and we will apply we'll take the bikes here or at his place. We will pull down the performance air filter for the time when it is being dried and lubed and all. तब तक हम जो OEM air filter है वो लगा देंगे, and then when it is dried and all, we'll again for after 1 day or 2 days, how much ever time it takes to dry, उसके बाद हम फिर उसे वापस place कर देंगे, and then we'll pull down the OEM air filter. That's our plan. Talking about the performance part of it, as it's a 350cc of bike, and how the mapping is there done from RE of a Meteor 350, like not starting of Meteors when it came, I have the Meteor from that plot. Okay, so it was very very energetic, I would say. So at first when I used to go in the first gear and it used to pull, then it used to give me a break in the sense it used to tell me to shift. Okay, at certain, cause it doesn't have a RPM meter to be precise. So what it used to do is, if I rev it to some extent, uske baad it used to tell me, the bike tells me to shift it. But now when I have changed the air filter, the RPM has increased a bit, I would say. Like जिनके पास Meteor है, they would get me. They would literally get me कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ in the first gear only. After that, for the second, third, fourth and fifth,
it runs more smoothly than what a OEM air filter will give you. I don't know about the mileage, because after putting the air filter in Madhapur, I came here to Nagarnamgura. It's around some 5 kilometers in, and it was completely trafficked. I came in the peak traffic time, so I couldn't tell what the whole change would come. But then bike was really light. It was breathing very nicely. First thing, and second thing is I have already changed the exhaust. I needed to change the intake of it. So the outtake is already changed. It's a free flow one. I changed the intake of it. Now my complete bike flows, but the air flows in the bike in a very free flow way. So now the response that I wanted to get from a bike is very good, I would say. It's better than the OEM air filter. It's much better, much better. Now the question still remains, do you need to change the air filter from the OEM to performance air filter? My question is, do you want to change your exhaust also along with it to a third-party exhaust, to a performance like a AAW or a RRP, something like that. There are a lot of aftermarket exhausts that we have. So if you want to do it, I would suggest, if you don't have the budget or money out of it, I would suggest you to first do the air filter and then do the exhaust. If you don't do both of them, I don't think so 350 Meteor और 350 कोई भी बाइक में आपको इतना noticeable difference आएगा जितना मुझे feel हो रहा है. If you are doing it just for the exhaust, what people do is people change the exhaust to change it to any local exhaust or anything. उतना difference नहीं आएगा. If you want your bike to breathe freely, then you need to put the exhaust also a free flow one. Apart from that, one thing was that why Engage only? Why only this brand? Why not BMC or K&N or DNA? And there was other one Scroll. So let me bifurcate it. So DNA, BMC and K&N come at a price of around 6,500 to 7,000 something. Okay. Scroll and Engage. Scroll is 2,500 for Meteor, and Engage is 3,000 lump sum. So for me, as a budget, as a guy, as a middle class guy, DNA, K&N and all those things were way out of the budget. And Scroll wasn't dyno tested, as what I have been told. Scroll isn't dyno tested. It will give you right amount of power, but it is not claimed, I would say. Engage, on the other hand, has claimed it, as well as they are putting it on papers as well. So that made me choose, if I'm going for a performance air filter, why not spending 500 more or something more, and go for a what do you call it, a paper written thing. दिल को सुकून मिलता है, simple thing. दिल को एक शांति मिलती है कि if you are going for a part, if you are spending your hard-earned money, मैं ना किसी एक अच्छी चीज के लिए जाता हूँ. Simple. I have ridden. I really liked it. I will put down the video of my friends also riding it, who have ridden my bike before, and then after that, so if they would find a noticeable difference and all, it will be in the video. So yeah, if a person who has a Meteor 350 and wants to buy a performance filter, if this video is for them. If they want a performance air filter, an upgrade to a performance air filter and upgrade to an exhaust, I would, for my thing, I would say go for the Engage one. It will do its job fantastically. Apart from that, an exhaust would be, I would ask you, if you want that, I say it a noise, cause 350 में कोई soothing sound नहीं आता. So if you want that loud noise, go for the RRP ones.
and if you want a proper thump or a deep bass note on your exhaust, and you don't want to let all the people around you know that you are coming, you just want it as like the stock, but it would be a free flow one, go with the AWs. तो अभी आकाश जस्ट मेरी बाइक चलाया विद द एनगेज एयर फिल्टर. लेट्स आस्क हिम व्हाट द रिव्यू इज. तो मैंने इसकी गाड़ी चलाई, परफॉर्मेंस में एक नंबर, लाइट वेट, पावर, माय गुडनेस, विद दिस एग्जॉस्ट. सो इट गिव्स यू लाइक चलो राइड पे चलते हैं, आप ले रुका जाएगा. सो दिस इज अ फील दिस बाइक गेव मी विद दिस performance of this filter. So yeah, definitely loved it, bro. Nice job, great job. Thank you. Catch you later. Bye.